सो डिले कले असुविधा हम। जय जगन्नाथ, वेलकम टू मिडसे ओडिया। सो आम आज देखा थर्मोडायनामिक्स रो एक क्लासटा राइट। सो ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स आमर बहुत गुटे लेक्चर हो सारी। यहाँ आम जो देखा थर्मोडायनामिक्स रो केते नंबर लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी 5टा लेक्चर हो सारी। 5 नंबर आम पढ़ते डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। सो टिके क्विक रिवीजन करदेबा बिकॉज बहुत सारा पिला टिके क्विक रिवीजन चाहते। सो लेट मी रिवाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, सो आम देखुले थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मीन्स योर दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज योर थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट इज सिस्टम सराउंडिंग। आम देखते सिस्टम जो मेजर करवा दैट इज सिस्टम। सराउंडिंग तार चारिपाट जगह को सराउंडिंग करवा। ओपन हीट आउ मैटर एक्सचेंज हम। क्लोज रे ओनली हीट एक्सचेंज हम। आइसोलेटेड नीदर हीट नॉर मैटर विल बी एक्सचेंज्ड। होमोजेनियस सिंगल फेज, हेटेरोजेनियस डिफरेंट फेज। मैक्रोस्कोपिक रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक बॉडीज एंड microscopy is related to smaller bodies, ions, atoms, subject. State function depends upon the initial and final path, final system, but whereas path function depends upon only the path. Dependent and independent, those who depends upon others are known as dependent variable, and those do not depend are known as independent variable. Okay. Next is intensive extensive. Intensive which is independent of an amount of substance, and extensive is your dependent upon amount of substance. Isothermal constant temperature, isobaric is constant pressure, then isochoric is constant volume, adiabatic is constant heat, right? Next, cyclic, that is process carried out to the initial state. Reversible, process in which both the system and the surrounding are in equilibrium. Okay. Irreversible जोटी तुम्हारा पुणी अवथरे back आसीबनी. Internal energy is the total energy stored in a system by virtue of its chemical nature. Further, it is as it is a state function, so it is determined from the final and initial part. And exothermic reaction by negative, endothermic by positive, cyclic by 0. Enthalpy of heat given or removed from a system, and it is given by the expression del S is equal to del U plus P del V, as it is a state function, so del S is equal to del U plus P del V. Further, exothermic by negative, endothermic by positive, cyclic by 0, isochoric by del U. Then enthalpy of a reaction होची enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Further आस्तिला तुम्हारा gaseous state जब हम देखिबा del S is equal to del U plus del N RT, and accordingly हमें problem भी solve करते हैं या को relate करके standard enthalpy of a reaction होची जोड़ा तुम्हारा standard condition रे like 1 bar pressure आउ 273 Kelvin temperature रहेगा. Enthalpy of phase transformation देखिबा जोड़ा तुम्हारा phase transfer हुए माने solid liquid, liquid to gas एवढा हुए. Fusion, 1 mole of a solid substance changes into corresponding liquid, से ठीक heat को हमें कहबा enthalpy of fusion. Vaporization रे कौन हबो लिक्विड टा गैस रे कन्वर्ट हो. सब्लिमेशन रे सॉलिड गैस रे बा गैस सॉलिड रे कन्वर्ट हो. फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माने 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होबा को जति की
हीट दरकार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन होची कोन तुमरा जे 1 मोल सब्सटेंस ये करिया पई माने 1 मोल सब्सटेंस तुमरा बर्न हवा पई बा जळिया पई जेति हीट दरकार दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होची तुमरा कोन एंथैल्पी इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रेकेज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड गोटे केमिकल बॉन्ड ब्रेक हवा को जेति एनर्जी लागिवो लैटिस एनर्जी 1 मोल आयोनिक सब्सटेंस फॉर्म हवा को फ्रॉम करेस्पोंडिंग गैसियस आयंस जेति एनर्जी रिलीज हबो बा एनर्जी लागिवो दैट इज लैटिस एनर्जी मु टिके शॉर्ट रे कहि दोछि हला शॉर्ट रे कहि देले जल्दी हमें पढ़ देबा आगु जिबा फर्दर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होछि कोन ना तुमरो इट इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेटेड एनर्जी जेतले तुमरो गोटे 1 मोल of a chemical substance is added to a specified volume of solvent to make a solution like 1 mole liter inverse तापर एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जोडी तुम्हारो 1 मोलर सॉल्यूशन को हमें कोन कले वाटर ऐड करिकि ताको डाइल्यूट कले हीट कैपेसिटी is the ability of a system to absorb or emit heat and this is q is equal to c del t what is c is equal to your heat capacity so heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius whereas molar heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius. We also know that C is equal to ms. What is S? S is equal to specific heat constant and m is mass. So we can write here that Q is equal to ms delta or ms delta theta. So specific heat of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. Further you know that Cp is equal to del H is equal to Cp del T, again del U is equal to Cp del T. So here we can compare again and we can get that Cp minus Cp is equal to R. Zeroth law states that all the things that systems are in thermal equilibrium existing at the same temperature, and first law states that the internal energy is equal to the difference of heat transfer into the system and the work done by the system. So work done by the system expansion जदि हबो W is equal to negative हबो मन रखो माने जेतले वर्क एक्सपांशन हबो माने सिस्टम जेतले काम करिवो वर्क सेतले नेगेटिव हबो किंतु आमे जेतले सिस्टम रे काम करिवा माने आमे जेतले गोटे सपोज गोटे जागा रहिछि से जागाटा को आमे कोन कले कंप्रेस कले से जागाटा को कंप्रेस कले माने गोटे बलून अछि से बलून को आमे चारियाडो प्रेस कले सेडो वर्क हबो पॉजिटिव किंतु सपोज आमे कोनोसी काम हला माने गोटे जिंस हीट हला गरम हबारु बलूनटा धीरे 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 फुलिला बा किछि गोटे सिस्टम धीरे 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 एक्सपांड करियो लागला सेडा वर्क हबो नेगेटिव ना क्लियर नै बुझियलानी वर्क नेगेटिव और वर्क पॉजिटिव को नै कि बुझियला वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव and work done on the system is always positive. कहा को डाउट अच्छी ओके बढ़िया ए टॉपिक भितरु एनी डाउट्स जदि तुमर अछि पचार सर मोर ओटे डाउट थिला को जे ओपन सिस्टम रे कहले बोथ हमर मैटर एंड हीट केमे एक्सचेंज हो मैटर तो केमे एक्सचेंज होइना ना होइनी तमे गरम पानी गरम करिवो पानी गरम कले पानीटा बाहर को जीवनी खोला जदि जगह थिवो हला ना मैटर एक्सचेंज क्लोज रे मैटर एक्सचेंज होबनी पानी केबे बाहर को जाई परिबो कि पानी सेठी ही रहइबो सर थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कोन थर्मल इक्विलिब्रियम माने मा दीड जगह हीट सेम रहइबो यार हीट तार हीट समान रहइबो ओके सर रिवर्सिबल प्रोसेस होता रिवर्सिबल प्रोसेस आ गोटे कोन अछि रिवर्सिबल माने बैक आसीबो इरिवर्सिबल माने तार बैक आसीबो नाही
ठीक अच्छे ओके चलो चलो हम देखिए सो आम ऑलरेडी पढ़ी देचे दैट ये आमर डेल यू इज इक्वल टू ये टिके करेक्शन हम डेल यू इज इक्वल टू ଆଉ ଗୋଟେ doubt क्यू माइनस डब्ल्यू आउ बड़का पर एटा करेक्शन टिके हम लेट मी करेक्ट दिस एटा क्यू माइनस डब्ल्यू हम है मोर एटा भूल थिला दैट डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हम प्लस हो जाइए एटा क्यू माइनस डब्ल्यू हम ठीक अच्छे इट विल बी क्यू माइनस डब्ल्यू प्लीज करेक्ट दिस एटा डिफरेंस कहई बट मुझे प्लस नहीं जाइए सो एटा मोर भूल अच्छे डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ओके ताले फर्दर आम कहीपर दैट क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू राइट सो यू कैन राइट हियर दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जो आम स्मॉल वार्क कथा आसो स्मॉल वार्क कथा आसो से कौन हम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू डी क्यू माने हीट ऑफ द सिस्टम आ डी यू माने कौन इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू माने तुम स्मॉल वर्क डन अच्छा मत कह जो सिस्टमटा एक्सपांड हम से वर्क डन नेगेटिव ना पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव ना पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वेरी गुड तो फर्दर हम देखा नेक्स्ट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आम देखा फॉर स्पेशल ये तुम केस वन देखा केस वन फॉर्मूला माने आम देखा ये तुम केस वन रे आइसोथर्मल प्रोसेस केमी अप्लाई हो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हाउ इज इट अप्लाई फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहूँ कौन दैट तुम जो तुम दीटा सिस्टम रही द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम माने दीटा सिस्टम रही सपोज ये बुझाया गले कौन मुझे बुझे दूसरी आउ टे भल भाव में दीटा सिस्टम रही दीटा सिस्टम माने मु मन कही यहाँ गोटे सिस्टम ये गोटे सिस्टम यही सिस्टम रो जदि मु कौन कहि यही सिस्टम रो जदि Q1 रोची ए सिस्टम रो जदि वर्क डन Q1 होची ठीक अछि इफ इट इज ए वर्क डन ऑफ Q1 फर्दर इस राइट साइड रो सिस्टम रो होची Q2 लेफ्ट रो होची Q1 राइट रो होची Q2 ओके सो आमे जेतोले दीटा सिस्टम कथा हम तो डिस्कस करछे कोन कहला द इंटरनल एनर्जी चेंज ए दी जन भीतर जहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज हम इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यार वैल्यू केते आसीबो इंटरनल एनर्जी चेंज रो वैल्यू दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम ताले ए सिस्टम रो से सिस्टम को केते की हीट ट्रांसफर होइछ ता ऊपर डिपेंड करिवो ओके ए सिस्टम रो से सिस्टम को केते की हीट ट्रांसफर होइछ आउ कोन ना वर्क डन केते होइछ एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम माने जोडी तुमरो कोन हो नेगेटिव हो वर्क डन टा जनरली नेगेटिव हो वर्क डन बाय द सिस्टम कहले वर्क डन टा नेगेटिव हो क्लियर सो आउ टिके मते एक्सप्लेन करिया कहले गोटे दिन गोटे जगह गोटे पॉइंट खोजे गोटे जगह मिलूनी
Hmm. बस सो आम सपोज ये दीटा बॉक्स नहीं राइट आमर दीटा बॉक्स नहीं गोटे Q1 गोटे Q2 यार यहाँ आमर दीटा सिस्टम सपोज नहीं गोटे राइट साइड रे गोटे सिस्टम अच्छी तार हिट कंटेंट अच्छी Q2 लेफ्ट साइड रे गोटे हिट कंटेंट सिस्टम अच्छी तार हिट कंटेंट अच्छी Q1 ओके लेफ्ट साइड रे जो सिस्टम अच्छी तार हिट कंटेंट अच्छी Q1 जो दीटा परस्पर को टच कर दिया निहाती भाव हिट ट्रांसफर हो आ हिट ट्रांसफर होगा द्वारा से इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो आउ से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू योर डेली इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू के वर्क है तो सही अनुसार हम ओके सो डेली इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू हम बुझीगला से एलिविट से जहा हो आम बर्तमान देखा जे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केमती अप्लाई हो हाउ इज इट अप्लाइड फॉर different cases so आम heading देबा application of first law of thermodynamics so here you can write here that application of first law of thermodynamics actually एडा टिके physics boy रू भी मिसे की पढ़ा पड़ुची माने कोटी कोटी केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री बुक रे भी टिके आउ टिके केमिस्ट्री बुक रू भलो देछि application of first law of thermodynamics मिक्स अप करी की पढ़ौची कोटी कोटी को पॉइंट्स माने किसी पॉइंट्स रही जो गुड़ाक फिजिक्स रे बहुत भल रही आउ किसी पॉइंट्स रही जोटा केमिस्ट्री एटा गोटे कॉमन चैप्टर तो माने पढ़ा लेनी ना थर्मोडायनामिक्स स्कूल रे यस सर गुड सो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट इज एप्लीकेशन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम माने सेठी कौन हम ना हीट चेंज हम ना मैटर चेंज हम राइट सो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नो हीट फ्लो हम नहीं इनटू द सिस्टम सो सिस्टम को हीट फ्लो हम ना सो आम कहीपर सो यू कैन से दैट Q इज इक्वल टू 0 सो Q इज इक्वल टू 0 बुझीगला हीट जेहेतु फ्लो हेनी सो Q इज इक्वल टू 0 क्लियर यस सर ताले फर्दर dq इज इक्वल टू du प्लस dw अच्छा गोटे आइसोलेटेड सिस्टम किसी वर्क करिवो कि वर्क करिवनी एक्सपैंड हम बा ताको टोटाली ता भीतर को हीट जाई परिवनी कि हीट ता भीतर बाहर को आसी परिवनी ताले से किछि एक्सपैंड हम बा कंप्रेस हम कि नो सर नो सो वर्क डन भी हबनी जेहेतु एटा गोटे आइसोलेटेड सिस्टम नो वर्क नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ना एक्सपेंशन हम ना गैस किसी कंप्रेशन हम कहीं सी गोटे आइसोलेटेड ना ता भीतर को किसी जापर आसपर हिट हिट देले तो सी एक्सपांड हम हिट रिमूव हेले कंप्रेशन हम ना हिट जीव ना आसो तेणु हिट जेहेतु जीवनी ताले कौन हम एक्सपेंशन हेनी जदि हिट रिमूव हेनी ठंडा हेनी ठंडा ना कंप्रेशन हेनी ताले सेटा ओबियसली वर्क डन 0 हम नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑकर्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ताले एटे वर्क कौन हम W इज इक्वल टू W भी 0 क्लियर वर्क डन 0 हम बुझीगला सो dq इज इक्वल टू 0 dw इज इक्वल टू 0 आमर फॉर्मूला था dq इज इक्वल टू du प्लस dw देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करो ताले dq इज इक्वल टू कौन हम du प्लस dw dq 0 du 0 dw भी 0 ताले du इज इक्वल टू केते आसीबो 0 ना बुझीगलानी क्लियर इज इट क्लियर यस सर so du is equal to 0 right so du is 0
तार माने कौन हम कहबा इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम ताले चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो माने तार अर्थ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी सब बेले कांस्टेंट हबो बुझियला Yes, sir. Okay, Jeet. Good evening to you. So, we can write here that therefore internal energy कहीं ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहो माने फाइनल और इनिशियल सेम रहो ताले इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहो therefore internal energy of an isolated system remains constant तो गोटे आइसोलेटेड सिस्टम पई तुमर कौन हम इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहिबो इज इट क्लियर Yes, sir. नेक्स्ट तापर फर्दर हम देखिबा आइसोथर्मल प्रोसेस ताले हम देखिबा आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल रे कौन सेम रहिबो कौन आइसोथर्मल रे कोडा कांस्टेंट Reactor. आ बढ़िया पढ़ेछि मु थर्मोडायनामिक्स सरस्वती एनीवन आइसोथर्मल रे कौन सेम रहिबो कौन कांस्टेंट रहिबो सरस्वती Sir, temperature. मैटर नुआ टेम्परेचर कांस्टेंट रहिबो सुश्री ओके सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कौन आसीबो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हबो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट so dt is equal to केते हबो चेंज इन टेम्परेचर del t is equal to 0 ना नहीं टेम्परेचर सेम रहिबो ताले del t is equal to 0 अच्छा जदि मन रख टेम्परेचर जदि सेम रहउची ताले इंटरनल एनर्जी भी 0 हबो कोन 0 हबो so del u is also 0 internal energy remains constant एटा गोटे मन रख पॉइंट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट at constant temperature at constant temperature टेम्परेचर कांस्टेंट रहिले del u कौन रहइबो कांस्टेंट रहइबो इज इट क्लियर प्रवीण आर यू देयर सरस्वती किए क्लास रे अछंदी मते माने गूगल मीट रे ओके सो del t 0 del u 0 ताले कौन फर्दर हबो dq is equal to du plus dw ताले कौन हबो dq और dq is equal to du plus dw du माने जा del u ता ताले dq is equal to 0 plus dw ताले work is equal to dq is equal to dw और q is equal to q is equal to w बुझेला Yes, sir. so work done is equal to तुम्हारा heat माने तुम्हें heat जेतिकी given रहबो ताले हमें कहि परबा heat केतिकी दिया जीवो heat केतिकी दिया जीवो heat supplied to the system is your the external work done मन रहला so we can write here that heat given to the system
heat given to the system cause external work done. So heat देले कौन हम सी external work होबो, right? Heat देले external work cause work done, cause work जदि heat हमें दबा heat देले कौन हम सी expand करिवो ना compress होबो, कारण W जहाँ रहिबो आमे जदि Q जदि पॉजिटिव रहिबो W भी पॉजिटिव रहिबो, W पॉजिटिव हेले कौन हम ताले एठी एक्सपांड हबनी कंप्रेशन हबो, बुझिलेनी? W पॉजिटिव ना कंप्रेशन पाई इनटू द सिस्टम पॉजिटिव हबो, जदि Q पॉजिटिव हबो W भी पॉजिटिव हबो, Q पॉजिटिव केते बेले हुए जेतोला हमें सिस्टम को हीट दबा, सिस्टम को हीट दबा माने कोनोसी गोटे जिंस को माने ऑब्वियसली हीट दबा गरम दबा बा माइक्रोवेव नहीं रखी दबा, राइट? बुझी होछि ना? तो गोटे सिस्टम को जेतोला हमें हीट दबा ता ऊपर कंप्रेशन हबो, आइसोथर्मल प्रोसेस रे कोन हबो कंप्रेशन हबो. So work done, heat given to the system cause work done on the system. सिस्टम ऊपर भी काम करिवो, हीट जदि दबा सिस्टम भी काम करिवो. अच्छा जदि हमें वर्क डन टा नेगेटिव हबो, जदि वर्क डन टा नेगेटिव हबो माने एक्सपांशन हबो, हीट टा कोन हबो W टा जदि नेगेटिव हबो वर्क डन टा नेगेटिव हबो, वर्क डन केते बेले नेगेटिव हबो एक्सपांड हेले, एक्सपांड हेले वर्क डन नेगेटिव ताले हीट कोन हबो Q टा नेगेटिव ना पॉजिटिव, Q भी नेगेटिव. अच्छा Q नेगेटिव माने हीट रिमूव हबो सिस्टम रो ना हीट दिया हबो सिस्टम रे, वेरी गुड. सो हमें कहि परिवा दैट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज कंप्रेशन सॉरी एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम that is your expansion cause removal of heat, cause removal of heat. ताले heat एठी remove होई जिवो, बुझियला ना? बुझा पड़ला नी? बुझी पाला सरस्वती, प्रवीण एंड जसवंत? Did you understand? Yes sir. एटा पॉजिटिव हेले सेटा पॉजिटिव, एटा नेगेटिव हेले सेटा नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू आइसोथर्मल प्रोसेस. सरीला नेक्स्ट इज योर थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक रे कोन कांस्टेंट सर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट. वेरी गुड. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस for isobaric process P remains constant. P constant हेले ताले वर्क डन कौन हम? वर्क डन इज इक्वल टू P डेल V. आम पढ़े W इज इक्वल टू P dV. कि समय आगु आम देखी गोटे मिनिट ये देख डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P dV. P dV थिला ना?
del H is equal to PU del U plus PdV थिला एंथैल्पी रो एक्सप्रेशन राइट थिला ना ना नहीं del H is equal to del U plus PBV P del V थिला ना इनिशियली ही आरंभ रो हम पढ़छे एंथैल्पी पढ़छे ना नहीं yes or no you are not Yes, sir. Body हाँ sir. so further ଆମର ଏଇଠି ବି କ'ଣ ରହିବ again del H ଜାଗାରେ ଆମେ del H ଯାହା heat ଯାହା enthalpy is converted into work done sorry enthalpy is converted into your heat is converted into enthalpy so here এই case ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ that del U is equal to मोर थिला del U is equal to formula थिला sorry dq is equal to du plus dw so dq is equal to du plus dw or again we know also that del H is equal to del U plus P del V so dq बदल रे del U लिख दो चला let me write so del q is equal to del U plus del W जेटा जेतु constant pressure होउची so del q is equal to del H एडे del q is equal to del H therefore कौन आसीबो ताले कंपेयर कले del q del H समान हैला ताले del W is equal to कौन हबो P del V और dw is equal to pdv clear Yes, sir. del q equal to del h এই কেস রে हाँ এই কেস রে del q is equal to del h হবো नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस एडियाबेटिक पढ़े बोली आइसोलेटेड है आइसोलेटेड माने आइसोलेटेड और एडियाबेटिक गोटे है नहीं नहीं आइसोलेटेड एडियाबेटिक दुटा अलग आइसोलेटेड अलग एडियाबेटिक अलग आइसोकोरिक प्रोसेस अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस रे कौन कांस्टेंट हबो Volume. volume constant so you can write here that for isochoric process volume is constant volume constant है dv is equal to कौन हबो 0 right Yes, sir. dv is equal to 0 हेले फर्दर कौन हबो dw is equal to 0 आगो ऊपर एक्सप्रेशन देखले ना dw is equal to pdv so dw is equal to p into 0 dv that is 0 okay so dw is equal to 0 आसिला dw 0 आसिले तापर कौन हबो del q is equal to कौन हबो del q is equal to del u plus 0 dq is equal to du plus dq is equal to du plus dw थिला right dq is equal to du plus dw dw के जगह हम 0 पकेबा सो dq is equal to du plus dw जगह 0 पकेबा therefore dq is equal to du but du is equal to dq माने change in internal energy becomes change in heat एटा को प्रोसेस रे माने जतले वॉल्यूम चेंज होबनी बुझियला Yes, sir. next point fifth point is
योर आइसोकोरिक गला तापर आछे हमर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस पई कोन कांस्टेंट Sir, heat. heat so for adiabatic process heat is constant but temperature not constant temperature constant रहबनी heat constant रहबो heat is constant heat constant रहले dq is equal to कोन आसीबो ताले 0 heat constant रहले dq is 0 dq 0 हेले ता बेले फर्दर हम एटा अप्लाई कर परबा कोन dq is equal हमर कोन थिला dq is equal to dw by dq is equal to du plus pdv so dq is equal to du plus dw dq जगह हम पुट करबा 0 is equal to du plus dw ताले dw is equal to केता आसीबो minus du by du is equal to minus dw और dw is equal to minus du और dw is equal to minus du ताले एडी कोन हो dw टा माने dw टा नेगेटिव हो जाउची नेगेटिव हैला माने कोन होची एक्सपांशन ना कंप्रेशन एक्सपांशन ना कंप्रेशन Sir, expansion. एक्सपांशन du टा पॉजिटिव माने फाइनल टा हायर इनिशियल टा लोअर थिबो du टा पॉजिटिव अछि माने u2 minus y1 is greater than 0 so u2 is greater than u1 माने फाइनल टा लार्जर थिबो फाइनल टा आ इनिशियल टा स्मॉलर थिबो ताले इंटरनल एनर्जी ए केस रे इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची ए केस रे जदि इंक्रीज होची आ वर्क डाउन टा नेगेटिव होची माने तुमरा कोन होची ताले एठी एक्सपेंशन होची ना कंप्रेशन होची expansion. very good expansion so you can write here that for increase in internal energy आमे जदि इंटरनल एनर्जी को बढ़ेई दबा for increase in internal energy the system expands सिस्टम कौन एक्सपांड करिवो सिस्टम टा एक्सपांड करिवो ने वर्क ऑन द सिस्टम हो ना बाय द सिस्टम हो बाय द सिस्टम ना ऑन द सिस्टम हो By the system. By the system. work by the system ताले एडी हम कहबा work done by the system अच्छा यार उल्टाटा जदि इंटरनल एनर्जी हमर डिक्रीज हबो कंप्रेशन हबो वर्क डन टा कोन हबो ऑन द सिस्टम ना बाय द Inside the system. inside the on the system Inside the system. very good for decrease in internal energy हमर जेतले कमी जीवो the system compresses so this is called work done on the system
सिस्टम उपरे काम कराबो कारण सिस्टम उपरे काम कले से कंप्रेस हो जिवो ये गला हमर को जे एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट हम जिबा तापरे 6 नंबर इज सिस्टम विथ सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस सिस्टम दीट जाग गैसियस सिस्टम हेतिबो गैसियस सिस्टम्स with similar number of moles दुटा सिस्टम रही किंतु नंबर ऑफ मोल्स हमर कौन रही सेम रही ओके तो से केस रे कौन हम से केस रे हम देखिबा जे कौन हम So I am लिखिबा that let's consider two systems of gas A and gas B with similar number of moles ताले एमान को जेतबेला हमें एक्सचेंज करबा एमान जते ऐड करबा से दिरा सिस्टम को कोन हो ताले let this be a reaction H एटा गोटे रिएक्शन देखिदबा केमती हम ना A give rise to B A B रे कन्वर्ट हैला ताले हम जानिछे दैट कोन हो ना यार n1 जहाँ यार n मोल यार भी n मोल थिला ताले हम कोइ परिबा दैट दिस इज del n is equal to 0 so here del n is equal to 0 ऑलरेडी हमें करछे pdv is equal to del n rt pdv is equal to del n rt और आमे भी देखिछे dw is equal to pdv so एटा लिखि परिबा we know तो न जानथिले भी लिखिबो we know हमर जने सार को कहंती तमे जानो कि न जानो लिखिबो we know I know लिखि दबनी we know ही लिखिबो we know dw is equal to कोन pdv again pdv is equal to del n rt again pdv is equal to del n rt so dw is equal to del n rt एटा ओनली अप्लाई फॉर गैसियस सिस्टम सबुड़ा सिस्टम नहीं आ या आगे गुड़ाक सब सिस्टम पे सॉलिड सिस्टम लिक्विड सिस्टम जो भाया सिस्टम एटा किंतु गैसियस सिस्टम पे ही अप्लाई सो dw is equal to del n rt ताले फर्दर एटे del n डा कोन हबो del n 0 ताले एटे dw केते हबो 0 ताले वी कैन राइट हियर दैट so dq is equal to du plus dw थिला therefore dq is equal to du plus dw भितर हमें dw जगह में कौन पुट करिवा del n rt आ ये टर्म दा 0 हो जिवो del n टर्म दा 0 हो जिवो so dq is equal to du as this term is 0 del n term दा 0 by du plus 0 so dq is equal to du
माने चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू योर चेंज इन हीट हीट जति बाबा जति तुम्हें हीट दबो दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी so dq is equal to du this is only applicable for your two systems with a similar number of gaseous moles and applicable for gaseous system only आउ कोथि पई हबनी को सर ये डेल एम केमती 0 होला बुझितले दीड जागा जीरो थिला ना चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स यार n मोल दीड जागा समान थिला ताले n माइनस n केता हो 0 जीरो होला बुझियला आज्ञा सर और टिकेले फास्ट लो सर जो फास्ट लो पर वर्क डन भी देखियो तापर नेक्स्ट adiabatic free expansion last application is adiabatic free expansion 7th number अब फिजिक्स क्लास अछि ना सुश्री तुमरो आज्ञा सर adiabatic free expansion तुमे जाई पारो न हले और 5 मिनिट जदी रहिबो रहि पारो सर जो मोर भी क्लास नले एटा पर नै पढे काई एटा पढे त दबा नले थाओ एटा पढ़ेबार अच्छी आउरी भी अच्छी आउरी गोटे साइक्लिक प्रोसेस पई अच्छी भी ठीक अच्छे साइक्लिक प्रोसेस पई भी अच्छी साइक्लिक प्रोसेस adiabatic फ्री एक्सपेंशन दीटा प्रोसेस तापरे सिग्निफिकेशन ऑफ फास्ट लॉ वर्क डन एति की नेक्स्ट क्लास रे देखबा आसंता काली जेतु टुमारो इज फ्राइडे राइट फ्राइडे ले आसंता काली 8 to 9 रखिले रखिबा क्लास और 4 to 5 4 to 5 4 to 5 8 to 9 रे आपने क्लास अच्छा करो ठीक अच्छे ओके 4 to 5 ही रखिबा काली क्लास ठीक अच्छे we will have the class on from 4 to 5 pm okay again tomorrow same time 4 to 5 pm ठीक अच्छे एटा चलिबो अप टू कमिंग संडे नो अप टू आई थिंक सब बेले चलिबो अप टू फर्स्ट जून जाए फर्स्ट जनवरी जाए okay thank you for joining the class thank you all of you thank you जाओ